एक मिनट एक काम करते हैं, ऋषि को बंद कर सर। पहले जो दो है वीडियो क्या है ऋषि वो हटाए ट्रांसफर दे देना ये भैया। वन सेकंड नहीं वो फ्रेम बना है। Business Head, Sony Entertainment Television, Digital Business and Studio Next, Mr. Danish Khan, and the legend himself, the host of the show in India's biggest superstar, Shri Amitabh Bachchan. Welcome and congratulations. Season number 14 shuru hone wala hai. 22 incredible years. Welcome and thank you so much. NP Singh sir, may I request you to please address our gathering and take us through what is going to come in and the... As Anuj just said... No, they can hear me. Okay. They nodded. As Anuj said, KBC started 22 years ago and we are now in the 14th season overall. A fairly long journey. 2010 is when we decided to bring KBC on Sony Entertainment Television for our viewers. The iconic host of KBC, Mr. Bachchan, agrees to do the show once again, and he graciously and I'm very sure that we'll have many more seasons with Mr. Bachchan in the future as well. As a great nation, and KBC also is going to participate in those celebrations, and we have decided that the jackpot winning amount. In addition, we are introducing a new padao at 75 lakhs, which will empower the contestant and encourage the contestant to take a little bit of risk for the next question, which is 1 crore. And it is your enthusiasm, your positivity with which, with every season, I think the entire country, we become stronger, wiser, and a little more kind every time a season comes out. So thank you so much for everything you do. 22 साल के बाद सर बीच में 2 साल हमारे ऑनलाइन भी ये लॉन्चेस हुए हैं और कई अलग-अलग फॉर्मेट्स में हमें लोगों तक ये खुशियां पहुंचानी रही हैं. How has your experience been, especially considering now that we're meeting everybody after 2 years? The pandemic actually kept all of us away from meeting anyone, and still there are many occasions when medically we are not about to be in public, so that's some kind of a holding back, but I'm very glad that we're able to have a live audience on the floor today and in this entire season. We tried playing with the audience somewhat distinctly by keeping them away, going through various tests and not being able to, touch the contestant, not being able to hold their hands or guide them to the chair if there's a lady, just going and embracing them when they do well. That was kept away, and that kind of a distance, that physical distancing was somewhere not the very same as we have now, but it's wonderful to have that atmosphere once again and to be able to feel a bit normal in that sense. So it's, I'm very glad that I'm here, and some of the restrictions that we had earlier on have now been removed and we are closer to the audience. इस सीज़न की ख़ास बात ये भी है कि इस साल हम स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे कर रहे हैं
और आज़ादी के गर्व का महापर्व हम मना रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस सीज़न में? किस तरह सेलिब्रेशंस होंगे और किस तरह ये कोइंसाइड हो रहा है द सेलिब्रेशन ऑफ द सीज़न 14 एंड ऑफ कोर्स 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस? ये अभी आपने देखा हमारा जो वीडियो उसमें, और मिस्टर एन पी सिंह हैज़ डिस्क्राइब्ड सम ऑफ द चेंजेस, जो कुछ बदलाव आया है, चाहे वो 7 करोड़ से 7.5 करोड़ हो, या वो 75 लाख का जो एक और पड़ाव है। कहीं ना कहीं वो इसकी वजह ये भी थी कि उसमें 7.5 में 75 दिखना चाहिए, या जो पड़ाव है 75 लाख का उसमें 75 दिखना चाहिए। तो एक ये बहुत ही सटल इंडिकेशन कि हम लोग अपना 75 आज़ादी का महापर्व मना रहे हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें उसमें आ गई। इंडिया इज़ ऑल्सो इवॉल्विंग ब्यूटिफुली, एंड इस सीज़न में हम कई कंटेस्टेंट्स को किसे मिलने वाले हैं जो सोसाइटी के अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आए हैं, एंड आई थिंक वी आर सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी एज वेल. सो यू हैव हैड ऑफ कोर्स द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद मेनी ऑफ देम एंड हियर देयर स्टोरीज एंड टेक देम टू द पीपल. तो इस साल इस सीज़न जो कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, उनमें क्या कहानियाँ आपको भिन्न भिन्न दिखी हैं, एंड हाउ वी सेलिब्रेटिंग इंडिया एंड इंडियंस? कंटेस्टेंट्स ही इस शो की महिमा है. जब वो अच्छे होते हैं, जब वो सही खेलते हैं, उनकी कहानियाँ जो हैं हमको सुनने में आती हैं, और किन कठिनाइयों से वो गुज़रते हैं या क्या क्या उन्होंने अपना योगदान दिया है देश के प्रति, उन सब को सुन करके हम सब बहुत प्रभावित होते हैं. हमारा काम तो केवल प्रश्न डालने का है और बताने का है कि सही है या गलत, लेकिन उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो सवाल हैं, उनके जो उत्तर हैं, वो हम सब से कहीं ज़्यादा एक बहुत ऊंचे स्थान पे हैं. और अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग जगहों से आते हैं. सबका कहीं ना कहीं एक योगदान रहा है देश के प्रति, और उसे जान करके और इस माध्यम से, केबीसी के माध्यम से इसका प्रचार हो देश भर में, ये सबसे बड़ी बात होती है. बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शायद पहली बार यहाँ आ रहे हैं, और उनकी जो कहानियाँ हैं, उनका जो योगदान रहा है वो अद्भुत रहा है. अभी आपने देखा हमारे वीडियो में जो एक आर्म्ड फोर्सेस से 2 जो आए थे, उनकी कहानी सुन करके तो आश्चर्य होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं. हमारा कभी इस ओर ध्यान गया नहीं, या उनकी कहानी हमने सुनी नहीं. वो जो आर्मी से आए थे, उन्होंने कहा कि 43 bullets or shrapnel are still inside my body. This is not a joke, you know. I mean, look at the sacrifice. और गर्व से कहते हैं कि जितना कुछ हमको लगा है, वो हमारी छाती पे लगा, हमारे पीठ पे नहीं लगा है. I was facing the enemy. I was not running away from it. These are some of the brave stories that we hear. And how wonderful for him to say कि मेरे अंदर जो खून है, वो मेरा खून नहीं है, वो हिंदुस्तानियों का खून है, क्योंकि इतने लोगों ने अपना खून दिया है उसकी जान बचाने के लिए. These are some of the amazing stories that we have. और आपने देखा होगा कि अलग अलग लोग आ रहे हैं. कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई प्रोफेसर हैं, कोई स्टूडेंट हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं. ये सब दर्शाते हैं कि देश जो है प्रगति के रास्ते पे कितनी तेज़ी से चल रहा है. और इनको यहाँ मिल करके तो हम बहुत प्रभावित होते हैं, और इसी तरह हम अपने शो को भी एक तरह से बढ़ावा देते हैं कि हमें अवसर मिलता है ऐसे लोगों से हमका परिचय जान सकें, क्योंकि दैट इज़ व्हाट रियली मेक्स गिव्स अ लॉट ऑफ ग्रेविटी टू द शो. धन्यवाद सर. मीडिया की तरफ से कुछ सवाल हैं जो मैं आप तीनों से पूछना चाहूँगा कि करके. तो पहला सवाल दैनिक भास्कर से है अमिताभ साहब के लिए. आप केबीसी के 22 वर्षों की जर्नी को किस तरह से देखते हैं? आपके लिए सवाल है सर दैनिक भास्कर से. केबीसी के 22 वर्षों की जर्नी को आप किस तरह से देखते हैं? कहाँ है वो दैनिक है? नहीं, सवाल मेरे पास आए हैं सर. अच्छा, तो मैं उनके बिहाफ पे पढ़ रहा हूँ. सर मैं देखता हूँ कि मुझे एक और नौकरी मिल गई, और क्या. Congratulations. NP Singh sir, money control से आपके लिए. Is there a collective thought process behind the creation of the campaign, thought that taps into the pulse of the country?
Absolutely. That's always our intent. We keep meeting a cross section of our viewers and people in general to understand where the nation is going, which direction are we moving in, and try and convey that message through our campaigns on Kaun Banega Crorepati. And I think we've been successful in most cases, if not all, and it gives us immense satisfaction that we are able to connect to them and get them on to view KBC and enjoy it. And also it's a a strong platform for knowledge and learning. So we're giving back to them as well in that sense. Thank you, sir. Danish sir, aapke liye, from Bombay Times. Like many music and dance reality shows, KBC gets many contestants from humble backgrounds, focusing on their emotional stories, which results in great emotions and tears. Do you feel, along with it being a crowd puller, does it help connect more with the viewers? I think by nature, Indians are emotional. And when they are on television, the emotions do come out. Because, you know, somebody who has sat for hours to get audition in Indian Idol or in a Super Dancer, or has spent so many time to listen to the question, answer the question, and come for an audition and reach a KBC set, it's a dream come true for that person, is always overwhelmed with the emotions. And as we know, this country, 140 crore population, they come from different socio-economic category. There are people who are startup, they're doing great in their life. There are people who are poor and they come from poor background. We don't actually design, we design the process in which they are audition and come to KBC or any other show, but we don't select them on virtue of their emotional story or otherwise. I personally believe if you don't have emotion, you will not come all the way. You know, if somebody is not emotional about KBC or about Indian Idol, why would he or she take that extra effort to come all the way? So that emotion comes, they come with lot of emotion, and sometimes when any person who comes and in a KBC set, in front of him or her there is Mr. Bachchan, it is very natural that person will get slightly overwhelmed and emotional about the situation. So I think it has very little to do with our desire, it is how the reality is. Wonderful, sir. Thank you. Amitabh sir, आपके लिए अगला सवाल नवभारत टाइम्स से. How do you see India being represented through the show as it celebrates 75 years of independence? मेरे ख्याल से जितना कुछ अभी तक हमने किया है, चाहे वो एक तरह से अभी आपने वीडियो पे देखा किस तरह से एक रचना लिखी गई है, कविता लिखी गई है, और उसके जो वाक्य हैं, उसकी जो बातें हैं, उसके जो शब्द हैं, वो दर्शाते हैं कि भारत किस पथ पर चल रहा है. और 75 वर्ष एक देश के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं. कई बार मुझे लगता है कि मुझे पूछना चाहिए कि और कितने देश हैं हमारे विश्व में जो कि 75 सालों में वो दिखा सकते हैं जो भारत ने दिखाया है, और आपको उसका उत्तर मिल जाएगा. तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, उन्नति हो, कहीं भी हो, 75 साल में जो कुछ भारत ने किया है, वो अन्य देश जो कि जिनको कि 75 साल हुए आज़ादी मिले, उनकी क्या स्थिति और हमारी क्या स्थिति, तो आपको पता चल जाएगा कि भारत कहाँ पर है. NP Singh sir, from Indian television. KBC, after being translated, please sir. Actually, I read somewhere that in a similar situation, one of the persons from our country was talking about, you know, how great India is and so on and so forth. And there was an Englishman who was there in front of him and said, you know, how about talking something about, you know, Britain? So he said, you are responsible for the largest number of countries being able to celebrate Independence Day. It meant to be a joke, but yeah, I thought it was very pertinent. Thank you, sir. NP Singh sir, from Indian television.
KBC, after being translated into an Indian format, has time and again adapted to trends. How do you make sure the show remains true to its core of celebrating Indians and their genius? As I said earlier, our constant interaction with the viewers and cross section of people keep us cued into the mood of the nation, and that's what you see on KBC, and gives us an immense connect with people and the contestants that come on the show, and with Mr. Bachchan